Big thumbs up. Great. So you can also appreciate your friends, though you must have seen their work. अगर नहीं भी देखा हो तो, but it is our duty to motivate others. So how you can motivate our friends? Give them a fist. This is how we motivate friends. Yeah, give them a fist. Yes, everyone give each other fist. Yes, very nice. Okay, great. So I guess we are ready to start, ma'am. So let's start. Yes, let's start. So we are going to start now, and today we are going to learn about Excel, Microsoft Excel. Okay? So just give me a minute so that I can share my screen with you all. And yes, so now you all know how to open files. आपको पता है ना Word हमने कैसे open किया, Microsoft PowerPoint हमने कैसे open किया. So the same way we are going to open Excel. So click on the left, then there will be an option. You go on New, then there will be an option of Microsoft Excel worksheet. So just click on that, and I'm going to put today's date. Okay. Yes. So this is how my screen looks like. So are you able to do it? आपकी भी screen ऐसी दिखाई दे रही है सबकी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. great. Yes, ma'am. Great. So we know how to open an Excel. Okay. So now firstly I am going to tell you कि ये Excel sheet होता क्या है और इसको क्यों यूज किया जाता है. सो व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, जब हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल जो स्कूल में आप जाते हो, सो स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, आपके कितने क्लासमेट्स हैं, सो मेनी क्लासमेट्स यू हैव, सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन स्कूल. सो ये सारे बच्चे कौन से क्लास में हैं, इनका क्या नाम है, ये सारे चीज का ध्यान कैसे रखा जाता है, तो हम एक्सेल के थ्रू इस चीज का ध्यान रखते हैं. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सेल बॉक्स, विद द हेल्प ऑफ दिस शीट, इट इज इजी फॉर अस टू रिमेम्बर कि ओके प्रणव इस क्लास में है, या साई इस क्लास का है, या साई का ये नाम है, साई का ये बर्थ डेट है. सो ये सब हम एक टेबल में लिख सकते हैं, and then it is easy for us to remember. Okay, so जैसे कि हमने Word और Microsoft. Yes, Ishan. Good evening, ma'am. Good evening, Ishan baby. Good evening. Okay. So yes, so जैसे हमने Word और PowerPoint में देखा कितनी सारी चीजें हैं, there are so many things. So the same way यहाँ पे भी कुछ चीजें common है. For example, the text, the size, the color, the font, bold, underlined, ये सारी चीजें यहाँ पे भी है. ये सारी चीजें सब जगह पे कॉमन होती है. So now today what we are going to do? We are going to do two things. First, I am going to teach you how to insert data. Okay? इसमें हम चीजें कैसे ऐड करेंगे, that I am going to teach you. And we are also going to play a game today. So are you excited? We are going to play a game on this. All right? Okay. So first we are going to do, what we are going to do is we are going to put some data into it. Data मतलब क्या होता है? Data is any kind of information. So आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ how to do addition. हम एक्सेल के थ्रू एडिशन कैसे कर सकते हैं. हम यूजुअली एडिशन कैसे करते हैं? उंगलियों से करते हैं ना, काउंटिंग करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू ऐड, राइट? बट कंप्यूटर मेक्स इट सो इजी फॉर अस. कंप्यूटर इतना इजी कर देता है आपके लिए कि आपने एक बटन दबाया और आपका पूरा एडिशन हो जाएगा. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो एज यू ऑल कैन सी माय स्क्रीन, आई एम गोइंग टू पुट फ्यू थिंग्स इन दैट. सो यहाँ पे सबसे पहले हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चीजों को टाइटल दे. सो द फर्स्ट टाइटल विच आई हैव गिवन इज अ सीरियल नंबर. ये टाइटल है हमारा. सीरियल नंबर मतलब क्या होता है? 1. यस, और इस एसआर नंबर लिखो. 1, 2, ये सारे टाइटल, ये सारे सीरियल नंबर्स होते हैं. ओके, सो वी आर क्विकली गोइंग टू गिव सम सीरियल नंबर टू इट. 4,
and 5. Okay. Now next title is going to be items. Items मतलब चीजें. Okay. So यहाँ पे मुझे कुछ चीजों के बारे में लिखना है. For example, bread. Okay. So I am going to write bread, milk, butter. और कौन सी दो चीजें लिखनी है यहाँ पे? चॉकलेट लिख दे? Should we write chocolate? Okay. और एक लास्ट चीज? आइसक्रीम. आइसक्रीम. वाओ. ओके. ऑल राइट. सी. सो यहाँ पे मैंने 5 चीजें लिख दी है. अब मुझे क्या करना है? मैं गई हूँ एक शॉप में. ओके. आई एम एट अ शॉप राइट नाउ. और मैंने इतनी सारी चीजें खरीदी है. आई हैव टेकन ब्रेड, मिल्क, बटर, चॉकलेट एंड आइसक्रीम. 5 चीजें मैंने खरीदी है. अब मुझे इसका टोटल करना है. सो टोटल करने से पहले मुझे पता चलना चाहिए ना कि मैंने कितने पैसे देने हैं. सो बिफोर आई डू द टोटल, आई एम गोइंग टू राइट द प्राइस ऑफ इट. अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राइस लिखूंगी. सो ब्रेड इज फॉर 25 रुपीज, मिल्क इज फॉर 20 रुपीज, butter is for 30 rupees, chocolate is for 55 rupees and ice cream is for 100 rupees. अब मेरे पास इन सारी चीजों के बारे में पैसे मुझे पता चल गए हैं. अभी कितने पैसे लगने वाले हैं. Now I need to do the total. अब इसका हम टोटल कैसे करेंगे? ये कितने पैसे होते हैं, इसका हम टोटल कैसे करेंगे? I am going to teach a very simple way of doing it. Okay. What you have to do is, here you go on the insert option. आप insert option में जाइए. Home के साइड में जो है insert option, click on that insert option. आपको एक not on insert option, यहाँ पे formulas का option आता है. Insert के साइड में page outlet है और page outlet के साइड में formula है. So you click on that formula and you get this sign. This is what? It's a like a E, a cross, inverted E. Okay? So this is a sign. So जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, ऑटोमेटिकली ये देखो सब कुछ ब्लू हो गया है, सब कुछ आ गया है. And the moment I press enter, see? Here comes my price. So ये जो टोटल पैसे मैंने दिए हैं, that was 230 rupees. Yes? Interesting thing to know. You take your time, look around how it's done. I will teach again. I will do this again. ये पार्ट मैं फिर से करूंगी. What I'm going to do, इस बॉक्स पे मैंने रखा है I have gone through formulas. अब मैं formulas पे गई हूँ और मैंने formula पे जाते ही auto sum पे जो ये inverted E वाला है auto sum, इस पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही जैसे मैंने enter को प्रेस किया 230 रुपीज. Yes, who all could do it? Very nice, I can see. Okay. Good, Kalyan. Thank you, ma'am. If you have not understood, you can ask me again. No problem. No problem. हो गया, आ गया. आ गया है? हाँ. अब मैं अगर आपको और एक चीज दूंगी तो आप खुद कैलकुलेट करके दिखाओगे, खुद ऐड करके दिखाओगे कैसे किया? अब एडिशन मैं नहीं दूंगी, ठीक है? हाँ. Okay. So let's go here again.
यहाँ पे करने का है कि नहीं? हाँ ये कर रही पार्टी बच्चा क्या बोल रहे हो? मैम, ये करने का है कि नहीं? फर्स्ट चार्ट। तो फर्स्ट चार्ट तो आप कर रहे हो, फर्स्ट चार्ट आपने मेरे साथ किया है। अब ये यस फर्स्ट चार्ट तो आपने किया है। अब ये सेकंड चार्ट जो है ये आप खुद से करोगे, आप खुद मुझे बताओगे, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ मैं चीजें लिख के देने वाली हूँ आपको और आपने खुद से करना है। ओके, सो हियर गोज पेन, पेंसिल, बुक, इरेजर एंड पैड। मैम यस बच्चा, मैम देखो। वेरी Thank you, नाइस ma'am. विभू, वेरी गुड विभू। कैसे मैम? यस कैसे मैम? पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको चीजें लिख के देने वाली हूँ विद प्राइस। यू आर गोइंग टू बी द वन हु विल कैलकुलेट इट। ओके, आप कैलकुलेट करके बताओगे, मैं सिर्फ यहाँ पे प्राइस लिखने वाली हूँ। अभी आपने मुझे यहाँ पे टोटल करके बताना है। अब यू आर गोइंग टू डू द टोटल पार्ट कि कितना आएगा इसका भी टोटल। यूज द फॉर्मूला एंड डू इट। I can see the kids trying and doing it. एक्सक्यूज मी, ऐड नहीं हो रहा है, कैसे फॉर्मूला में जाके क्या करेंगे? मैम यू हैव टू गो ऑन फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज में जाके ऑटो सम पे क्लिक करना है। बट ऑटो सम क्लिक करने से पहले यू नीड टू बी ऑन दिस बॉक्स। वेरी नाइस। यस, यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो कि टोटल कितना आया है। देयर इज एन ऑप्शन ऑफ चैट बॉक्स हियर। आपको जूम पे चैट बॉक्स का ऑप्शन आता है। 100 rupees. चैट बॉक्स 100 आया। वेरी नाइस, 100। गुड। ये फॉर्मूले से किया ना? हाँ। वेरी गुड, वेरी नाइस, मैम 100। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। मैम का भी आंसर 100 आया है। अब आपको पता है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन सीक्रेट, कैसे फाइंड आउट करना है अगर फॉर्मूले से यूज किया होगा, अगर आपने फॉर्मूला यूज किया है या नहीं यूज किया है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, आप जैसे यहाँ पे 100 रुपीज है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ये देखो ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, द वन आई एम हाईलाइटिंग हियर। इससे मुझे पता चलता है कि आपने एक्चुअल में फॉर्मूला यूज किया है। अगर मैं इसके जगह पे फॉर एग्जाम्पल सिर्फ डायरेक्ट ऐसे 100 लिख देती, तो द मोमेंट आई विल क्लिक ऑन दिस, मुझे सिर्फ यहाँ पे 100 लिख कर आएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये तो विदाउट फॉर्मूला किया गया है। तो विद फॉर्मूला हम कैसे करते हैं, ये पता रखने के लिए अगर कोई भी फॉर्मूला से यूज कर रहा है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे 100 के ऊपर, आपको यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिख के आ जाता है। यहाँ पे ऊपर सबको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे द वन आई हैव हाइलाइटेड हियर इज इक्वल टू सम इनटू ब्रैकेट C9 दिखाई दे रहा है ना? यू कैन शो मी अ थम्स अप इफ इट्स विजिबल टू यू। यस, ओके, ग्रेट, ऑल राइट, नाइस। So now we go to the next thing. अब ये तो हो गए हमारे दो टेबल। अब ये दो टेबल को हम अलग अलग कैसे करें, पता तो चलना चाहिए ना, ये दो टेबल अलग अलग हैं। So what I am going to do, I am going to first select this complete table.
मैं इस कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू गो हियर। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देयर इज अ स्क्वायर वाला ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ऑन ऑल बॉर्डर्स। ओके, ऑल बॉर्डर्स वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगी। तो जैसे ही मैं ऑल बॉर्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, ये देखो मेरा एक टेबल रेडी हो गया। मेरा देखो एक टेबल पूरा स्क्वायर 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 स्क्वायर्स में आ गया है, ब्लैक कलर हाइलाइटेड। I will show it to you again. You select the complete thing. You go on this option, box option. आप यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप बहुत सारे ऑप्शंस में से ऑल बॉर्डर्स पे जब क्लिक करते हो, आपका बॉक्स हो गया रेडी। Yeah, ma'am. Done. Yes, you could do it. Yeah, ma'am. Great. Nice, very nice, Anmol. Good. Nice, I can see the kids doing it. Yes, good, Kalyan. Thank you, ma'am. Good, good. Good. मैम हो गया। हो गया अर्जुन, good. And will you repeat the process of addition, please, again? Yes, ma'am. I will just do मैम that. मेरा हो गया। Very nice, Manas. Good. Okay, so ma'am, what we have to do? ये सब जो total किया है, इसके just you have to come on the bottom of it, and you go on the formulas. You click on the formulas. Then there is an option of auto sum. सबसे first option आपको आता है auto sum. The moment you will click on auto sum, it will automatically get calculated for you. All you have to do is press enter. Okay? Okay. Yes. Okay, babies, doing it so nicely. Good. Ma'am, Yes, very nice, Sanjeevni. Good job. Good job. Good job. अब ये मैम ने यहाँ पे येलो कैसे हाईलाइट किया? इट्स वेरी सिंपल. ओके बेबी, स्टॉप स्क्रिबलिंग ऑन माय स्क्रीन. ऑलराइट, सो ये मैम ने कैसे हाईलाइट किया? हाउ आई हैव हाईलाइटेड इट इन येलो? इट्स वेरी सिंपल. ऑल यू हैव टू डू इज, आप यहाँ पे होम पे हो. ऑल यू हैव टू डू इज you will just click on the box which you want to highlight. कोई भी box आपको highlight करना है, आप उस पे click करोगे and you will go here, fill color, paint इसमें, and you can select whichever color you want to select. So this is how you can color the whole box, and not only box, you can also color the written thing. जो अभी मैं प्राइस को भी रेड कलर कर रही हूँ. So this is how my price is in red color now. Okay? Yes. So this is how you are going to do the coloring wala part. Okay. Doing it nicely. Okay, do it, do it, do it. Yes, I can see few screens.
I can see few screens. Okay. Completed. जल्दी से करेंगे हम कंप्लीट. Yes, done. You can show me a thumbs up if you are done with highlighting it and creating box. Okay, with coloring it and creating box. Okay, now here comes the fun part. अब मैम आपको एक बहुत फन चीज दिखाने वाली है, वेरी इंटरेस्टिंग चीज, that how are we going to create chart or graph for it. Okay, so अब मुझे पता रखना है, अब I want to know कि ये जो ब्रेड, मिल्क, बटर, चॉकलेट और आइसक्रीम जो है, इसमें सबसे ज्यादा प्राइस कौन सी चीज की है. So what I am going to do, I will just select it all. अब मैंने इसको पूरा सिलेक्ट कर दिया है. You can see it all. It is all gray. And I have clicked here. यहाँ पे ऑप्शन आता है when you go in insert. यहाँ पे home है. You click on insert and there is an option of charts. Okay. So when you click on chart, there is an option of so many charts you can have. You can have pie chart. You can have bar graph. Anything you can have. So I have just clicked on this और ये देखो आ गया कलरफुल. अब मुझे पता है कि किसकी प्राइस सबसे ज्यादा है. Wait, we will select the easy one. Okay, we have gone to the insert and we have gone to the chart option and Ma'am, I have done. you have done. Yes, ma'am. Very nice. See, now here comes my table. अब मुझे यहाँ इस टेबल से पता चल गया कि आइसक्रीम की प्राइस सबसे ज्यादा है. Yes, and you can also change color from here. आप यहाँ से colors भी change कर सकते हो. Whichever colors you like, you can also select colors from here. Do I need to show this again quickly? Ma'am, done. Yes. I will show this again very quickly. So what you have to do, you have to first select this. यहाँ से सिर्फ आइसक्रीम तक सिलेक्ट करना है, टोटल तक सिलेक्ट नहीं करना है. You will only select till ice cream. You will make it all gray. Only select till ice cream. Then you go on insert. और आप जैसे insert पे जाते हो, then there are so many options of chart. यहाँ पे आपको बहुत सारे options आ जाते हैं to create charts. Okay? So जैसे ही आप create charts पे जाते हो, you can select whichever chart option you want. आप इसमें से कोई भी select कर सकते हो. And I have selected this one. So अब मुझे पता है कि आइसक्रीम की प्राइस सबसे ज्यादा है because ये बार सबसे लंबा है. ओके, और ये बार मिल्क वाला बार सबसे छोटा है. So we know milk is 20 rupees. Bread was 25 rupees. Yes. Wow, I can see the kids doing it so quickly and fast. Yes, Kalyan. Ma'am. Yes, Rigved. Very good, Manas. Good. Good. Joan, yes, very nice. Very nice. Ma'am, done. Good, Arjun the Adorable and Arjun Mishra, Ashutosh. Wow, Anmol. See, I always tell my kids are so smart. कितने जल्दी कर लेते हैं. Very nice.
Ma'am, done. Yes, you're done. Good. Can you show me one more time because it got disconnected? I couldn't follow. Okay, ma'am. I will just show it to you. Yes, very good, Ayush, if you are done. But I can't see your screen. Okay, your screen is off. Okay, so I will quickly show how it's done once again. All you have to do is you select till ice cream, make it all gray. Select till ice cream. Then you go on insert option. Once you go on insert option, you will get an option of having so many charts. So out of which you can select any which chart you want. I'm going for the bar one, and you just have to click and it will come readily available for you. Okay, ma'am. Thank you. Got it. Yes. So ये तो मैंने बता दिया है. Now everyone has used bar. मैंने देखा है कि बहुत से बच्चों ने bar graph ही use किया है. Now for the next one, this one, do another chart. Use some another chart. Use some another chart. कुछ और use करें इसमें. Use something else for the pencil, pen, book, eraser, pad. For pencil, pen, book, eraser, pad, use some another chart altogether. Use some another chart. खुद से यूज करना है. Ma'am, is it correct? Yes, let me just see your screen. Yes, Kalyan. Thank you. Yes. Great, the kids are doing it so fast. How to add the numbers? Aniket, the numbers here in the table. Yes, ma'am. बच्चे you are typing it. आप खुद टेबल में टाइप कर रहे हो. Okay, you are just typing it. Ma'am. Yes, Manas, very nice. I can see a different color. Good. Ma'am. Good, yes, very nice, Sanjeevni. I can see a pie chart there. Good. Wow. Very good, Kush. I can see a bar graph and a pie chart there. Very nice. Manish. Good. Good. Doing it so nicely, all of you. Good. Joanne, okay, that's nice. Great. Great. Anmol, good. Yes, you can also have whichever colors you want, okay? So आप colors भी decide कर सकते हो. Here you get an option of colors. See how nice it looks. So you can have option of colors. Yeah, ma'am, done. Yes. You can have whichever option that you want. Oh, that's too much. Yes. So this is how it's done. Go, Baba. Come, I'll take a photo. Yes. Very nice, Ananya. Good, good. Keep it up, good. Doing it so nicely, all of you. Good. Rigved. So nice. Nice, nice. Yes, Ayush, you have raised your hand. You want to say something? Ma'am, can you please explain? I'm again? done. Good, Pranav. What do you want me to explain, Ayush? Ma'am, this pie chart. How to create a pie chart? Yeah. Okay, so it's quite simple.
you just have to, okay, first I will put it here. Okay, so what I'm going to do, I will select it all. I will go on the insert option, and there is an option of pie charts here. So I just have to click on the pie. There is 2D pie and 3D pie. Okay, so I will just click on the pie chart here and see how it all comes in different colors. So आपको नीचे option आते हैं. Yes kids, you get option there. आप नीचे देख सकते हो that you can see here my ice cream is in dark blue color. So ये सबसे ज्यादा आइसक्रीम, सबसे ज्यादा स्पेस आइसक्रीम नहीं लिया है ना, मेरे 100 रुपीज का आइसक्रीम है. So my ice cream is in dark blue color. Then comes my chocolate. So आप देख सकते हो कैसे कैसे शेप्स बदल रहे हैं यहाँ पे, कैसे कैसे बहुत बड़े शेप से हम छोटे छोटे शेप्स की तरफ जा रहे हैं. Okay? Yeah, ma'am. Thank you for explaining. Yes. Okay, cool. Everyone done? You can just show me a thumbs up if you're done. Great. Done, ma'am. Very nice. Done, done. Cool. Done. Done, Siddhant. Very good, Balaji. How nicely. दोनों टेबल का किया है ना? You have done it for both the table. Do it for both the table, okay? मैम कर दिया मैंने. Done. Okay, good, Dev. I'm done. Good, Manas. Good, Ishan. Good, Balaji. Good, Kush. Yes, good. Joanne. Okay, good. Arna. Arya. So nicely all are doing it. So good to see that. That's good. I'm done. Yes, good, Ayush. Good. Okay. So now let's play a game. Chalo, game khele. All excited for the game? Yeah, ma'am. Okay. Yes. So the game is very simple. I will quickly explain it to you what the game is all about. What are we going to do here is, let me go to the slide. Okay. So yes, this is how you can select. This is how you can go on to the new slide. अभी यहाँ तक हो गया ना? अब इसका क्या करें आगे? So here there is an option of plus. Okay. So once you click on plus, you come on a new sheet altogether. आप एक नई sheet पे आ जाते हो. So now we are going to come on a new sheet. So whenever you want, you can again go back on first sheet and see what you have done. आप फिर से second sheet पे आ सकते हो, आप दूसरा काम कर सकते हो. Okay? So your things will not go anywhere. So now everyone is going to click on this plus sign जो यहाँ पे corner में है, left side corner में है. Plus sign पे हम click करेंगे. We have come on new sheet. And now we are going to play a game. Okay? So the game is very simple. All you have to do is you have to create something. आपको कुछ बनाना है इस screen के ऊपर only by using these colors. Okay? So I will show you what you need to do. Okay? So यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे कलर फिल का जो ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया, you can select whichever colors that you want. So what are you going to do? Yes? Ma'am, here in our application Excel, we cannot see the plus sign. Rather, we can see sheet 1, sheet 2, sheet 3 likewise. Okay, So, ma'am. Can we Then you select can sheet come. 2? Yes, then you can come on sheet 2. Okay, ma'am. Of course. Yes. Okay. So the game ऐसा है कि आपको क्या करना है, आपको ये colors use करके you have to create something on the screen. So I'm quickly going to show you what and how you have to do. Okay? So सबसे पहले आपको ध्यान देके देखना पड़ेगा कि मैम क्या कर रही है, फिर ही आप बना सकते हो. So I have selected this box and I'm doing yellow color on this. Yellow color. Then I come on this box, yellow color. Yellow color. Steps banana. So this is no ma'am.
just wait for a minute before I finish it up completely so that I can explain to the kids. See, you have to create something. आपको कुछ बनाना है just using these box and just using these colors. Okay? I can see everyone paying attention to me. Okay. So see, here you can see I have created a shape. यहाँ पे मैंने एक shape बनाया है. Can you all see this shape? Yeah, ma'am. Can you all see this shape? Yes. Yes. But on this complete screen, आपका game ये है, आपका task Yeah. ये है. On this complete screen, you have to make something. But आपको ये तो पता है ना कि आपको boxes में ही बनाना पड़ेगा. So you have to just use these boxes and create something. Okay? आप house बना सकते हो. You can make a lot of things from these boxes. All right? So everything is going to be unique. Everyone is going to make unique, different things. So now your time starts now. Start making whatever you feel like making using these boxes. Parents, I am giving this activity on purpose for them. I will be explaining it later on why we are doing it. But just make sure that they are doing it by themselves and they can make whatever shapes that they can. It is about spatial identity. It is about understanding the things around and doing it accordingly. So let's see what the kids create. आप कुछ भी बना सकते हो, जो आप चाहे बना सकते हो. Yes, now I can see all the kids. Now I can see all the kids. You can use whichever colors that you want. Anything that you would like to do. आप जो क्रिएट करना चाहते हो आप क्रिएट कर सकते हो. I will quickly show you an example. Okay? मैं आपको एक एग्जाम्पल शो करती हूँ. Just give me a minute. I will share my screen again with you all. Okay. So here comes my screen. You can see this is created on Excel. ये Excel पे create किया है. देखो ये boxes में create किया है. He had made a face. Can you see all of you? Yeah. Yes. So you have to create something like this. आप अपने हिसाब से you can take your time. See on these boxes he has created a face. So you can create whatever you want to create. Ma'am, Ananya, finish. Okay, can I see what's been drawn there? Okay, no ma'am, actually that is that was the example which I had shown. They have to make their own creation. They have to draw something on their own. So I have shown an example कि कैसे किस तरीके से एक चेहरा बनाया है screen पे. So they can use and they can do whatever they want to do. They can create whatever picture they want to create. Okay. I was just telling them how that can be done. Ma'am, how can I put it on reverse and show you what Siddhant is doing?
I'm not very familiar with Zoom. Okay, ma'am. So, first of all, the video is switched off, so I can't see Siddhant. Second thing, if you're using phone, so yes, you have a phone, right? And he's doing on laptop. So, just you can start the back camera of the Zoom. That will work. Back camera. Yeah, there is an option of back camera. Or else you can just show like 1 So the minute. I'll Yeah. call it like this only. Wait a second. Okay, yes, I can see he's doing yes. Right, Siddhant. I can see a blue box. He made the blue one and now Yes. he's making a yellow one. Okay, great. Great. See, this is an example I am showing it to you on screen. ये एक चेहरा बनाया है स्क्रीन पे. You can make whatever you want to make. There is I will also show. Wait. So there is also a Christmas tree which was drawn. There are so many things which are drawn, which can be drawn. Ma'am, 1 minute. Yes, ma'am. Is there any name for this activity? Ma'am, name as in on Google. Okay, ma'am. Okay, I can see Rucha doing something. Rucha Mule. Windmill. Okay, windmill. Wow. Great. Ma'am, I have done. You have done? What have you drawn? Okay, can I see? I can't see your screen. What are you drawing? Okay, Balaji, what have you done, baby? Ma'am, I saw some picture that is going. You have Ma'am, to I'm draw writing Ishan. picture on the screen. Oh, you are writing Ishan. Very nice. Bacha, Balaji, you have to draw a picture. Okay, we won't be downloading it. हम download करके उसको copy paste या फिर इस पे नहीं लाएंगे. हमें खुद से draw करना है on these boxes. Should I show it to you how it's done? एक्सक्यूज मी मैम, एक बार रिपीट कर देंगे? बेटा जरा वॉशरूम चला गया था, थोड़ा सा लेट Okay, हो ma'am. गया। मैम एक्चुअली हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं वेयर आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन. सो ये इनका गेम है that they have to draw object, okay, whichever object that they want to draw using the colors. So जैसे for example यहाँ पे I am doing, जैसे अभी मुझे ईशान ने बताया, so I will just type, I will make I here. दूर कर दिए. Yes. my screen, ma'am. So this is how I have done. I have made a T. My They have to create objects. They have to make objects. They can do any diagram, anything that they want to do using the colors. Yes, bacha. Thank you, ma'am. Ma'am, Alia has done with house. Wow, Arya, you have made a house. So beautiful. Ma'am, Swastik did a car. Swastik has made a car. Okay, Swastik, can I see your car? Yes. Can you see it now? The car? No, ma'am. Actually, your screen is off now. Oh, Kush has made India's flag. Yes, ma'am, we were about to say that only. Wow. Ma'am, look, Indian flag. Can you see it? I'm also done. Wow. I was not aware कितनी सारी चीजें हम बना सकते हैं. House, car, India flag, your own name.
Yes, you don't have to stop here. Okay, you can keep on drawing. अगर आपको कुछ और भी draw करना है, you can draw. You can draw it by yourself. You don't have to stop. Okay, you can continue drawing. Wow, so nicely the kids are doing, I must say. Oh, Swastik, yes, now I can see your car. Green color car. Wow. You can change something, na? Yes. Arjun, the adorable Swastik. That's so nice. So nicely the kids are doing it. Wow. Car. I'll do car. Oh, you're doing a car? Yes. Good. Rigved, wow. I can see 2-3 colors here. क्या बना रहे हो आप बच्चा? Wow. Mellow to life. Oh. Community on your. Wow. Okay, I can see Nilima. TIN तो मुझे दिखाई दे रहा है, सो कुछ तो लिखा जा रहा है. Wow. So nice, all of you. Nice. Keyboard पर जो तो है. So good. Nice. I made t-shirt. You have made t-shirt, Dave? Show it to me. Yes, Pranav. Wow. Steps. You have made steps. Dave, आपको थोड़ा सा आपका लैपटॉप थोड़ा सा ऐसे टर्न करना पड़ेगा for me to see. Okay, what has Manas made? I can see so many colors. Yes. Yes, very nice, Dave. Very nice. I can see your t-shirt. Beautiful. Yes, Nice. Can I save this? Yes, very good. I made one. Okay. Good. And I have taught you how to save. So बोलना नहीं, save करना कैसे है? I have taught you how to save. And I can see in the chat box, Kush, please tell me how to make Indian flag. So we have a friend, Kush. Arjun has asked you how to make an Indian flag. So should I teach all of you how to make an Indian flag? चलो सीखें Indian flag कैसे बनाना है? क्या कुश हमें सिखाएगा? Kush, are you going to teach how to make an Indian flag? Yes, ma'am. चलो Kush, we will. Okay, Kush सिखाने वाला है. Okay, Joan. Okay, yes. Oh wow, that's beautiful. Actually, first select almost about 5 to 6 columns and 5 rows. Okay, so everyone select 5 to 6 columns. Ma'am. Columns means those box. We are making an Indian flag. Then fill with the orange color. Fill with orange color. Orange. Yes. Wait, ma'am. Again. Wait, ma'am. I guess. Okay, ma'am. Better you show on the screen only. I will also come on screen. Okay, so I have selected. Ma'am, you tell me. I will do it. No problem. First, select 5 to 6 columns and rows. Okay, 5 to 6 columns and rows have been selected, and I'm going to color it. Orange. 5, 1, 2. 3, 4 खोल दिए मैंने. 1, 2, 3, 4, 5. Again, select 6 columns and column 6 or row. Yes. Then again I do it the same, and I make it in white color. And end with green color. Green. Wow. Then ma'am, how to put the circle? Circle, we already know, we did it in the Word document. Yay! Everybody knows how we insert circle. How we insert circle? Word document में कैसे सिखाया था how to insert circle?
Insert shapes. Then circle. You go to insert. Insert. You go to shapes. Circle. Shapes or symbols. Wait. Yes. You go to shapes. Then there is an option of circle. Circle is in the first row only, I think. 1, 2, 3, 4, 4 column. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 column, Ishan. 8, 6 column. Yes. Ma'am, 6 column. Yes. 6 column. And now for the stick part, we have to select a single column for innumerable Yes. rows. Single 5 to Depends 6. on your choice. Wow. Okay, And so color I it guess black, brown, blue, whatever. I will select from here. So I'm going from here. Oh wow. Yay! I've learned how to make Indian flag. I'm going to clap for myself. I learned how to make an Indian flag. I don't know this. So everyone, yes. So I have also made an Indian flag. क्या आप देख सकते हो मैम की screen? Can you see my screen, all of you? So I have made an Indian flag. This green color is not appropriate. I'm going to go for the darkened one. No. Yay, all of you. Yes, I have made an Indian flag. Thank you so much, Kush. Thank you so much, Pratiksha ma'am. So, Arjun, आपको अभी आ गया इंडियन फ्लैग कैसे बनाना है? मैम आ गया। Wow. हाँ, And ब्लॉक टू ब्लॉक बना Yay. गया। Very nice, all of you. ना तो इंडियन फ्लैग अच्छा लगेगा। Very nice, Rigved. I can see so many Indian flags now. I will just stop sharing my screen so that I can see everyone's screen. Okay, so Manas has made an Indian flag and Arjun has made an Indian flag and Manish has made an Indian flag. That's so nice. So Astik has made an Indian flag. Cool. Nilima has made an Indian flag. Very nice. Wow. Nice. Yes, so nice. This looks so good. कितना अच्छा दिख रहा है. Yeah. Beautiful. A flag. Yes. So now we all know how to make an Indian flag on Excel sheet. हमने Excel में Indian flag बनाया है. Ma'am, Yes. flag. Beautiful, Sanjeevni. Very nice. Very good, One more. Siddhant. One more, ma'am. And Independence Day. Oh, Independence Day is there. It's on 15th August. Ishan. लिखना है कुछ 15 अगस्त में। हाँ, जब 15 अगस्त आएगा तब हम करेंगे. चलो करते हैं। ma'am. Yes, wow, Omkar, good. Everyone quickly clap for yourself. Quickly clap for yourself. कितने अच्छे से किया है सब बच्चों ने. Everyone made an Indian flag. And so simple, so easy to make. No one thought कि हम Excel में drawing भी कर सकते हैं. The drawing. Okay, so game खेल के मजा आया? You liked it? Game खेल के अच्छा लगा? Yes. You can show a thumbs up, quick thumbs up. Yes, one more very important thing. Indian flag का color change नहीं होगा, okay? It needs to be saffron, white and green with blue circle. So Indian flag हम color change नहीं करेंगे. Other than that, you can use any color that you want, but our Indian flag needs to be in saffron, white and green with blue circle in the center, the chakra. Great. So quickly clap for yourself and you all are going to share with me
your work. आपने जो कुछ किया, wow, very nice, Arya. Arya has made a home and she has written stay home. Beautiful. So much of creativity the kids have. Time check. We have Yes. So once again, quickly clap for yourself. And I'm so happy that you all have done it so nicely. आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो WhatsApp पे. And with that, I'm going to give you a quick assignment क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे संडे है, सो एक होमवर्क तो हम जरूर कर सकते हैं. सो आई विल सेंड असाइनमेंट ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, सो योर पेरेंट्स विल चेक इट और वो असाइनमेंट करके होमवर्क करके आपने मुझे भेज देना है. ओके, टिल देन एवरीवन प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे होम. इट्स रेनिंग आउटसाइड, बहुत ज्यादा बारिश है सब जगह पे, सो घर से कहीं बाहर मत निकलिए, बारिश में बिल्कुल मत भीगे. एंड यस, and I will see you all on Monday. Enjoy your weekend. See you all on Monday. A big thumbs up. Yeah, I can see so many smiling faces today. मंडे को क्या करेंगे? मंडे को हम एक नई चीज सीखने वाले हैं देव. आपको मैं फर्स्ट टाइपिंग सिखाने वाली हूँ. मैडम, excuse me, please report the homework. See you on Monday, everyone. Bye. Bye bye. Bye bye. Madam, please repeat the homework. Please repeat the homework. No sir, I'm sending the homework. I will send the homework in WhatsApp group. You have not missed out on anything. I will send the homework on WhatsApp. Yes. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye.